Welcome back at the CIT era session number 34. तो चलिए देखते हैं सेशन नंबर 34 की नॉलेज टेस्ट वन के क्वेश्चन आंसर के बारे में. So first question is, you can check for spelling errors in a presentation from the dash group in the tab. इसका आंसर है डी, proofing review. Next question, the spelling, translate and language options are present in the dash tab. इसका आंसर है review tab. Next, सेशन नंबर 34 नॉलेज चेक टेस्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, टू whom डू यू प्रेजेंट बिजनेस स्पीच. इसका आंसर है बी, योर इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑफलाइन मोड in the offline mode, which option do you have to click for exploring more PowerPoint templates? तो इसका आंसर है डी, more themes. Next question, you want to delete a slide from the slide sorter panel. You right click on the slide. Which option do you have to select them? इसका आंसर है ए, delete slide. Next question, you have data in your slide that has been formatted uh, and imported from an Excel sheet. Now you want to change the formatting. The option you have to select for doing that is, this answer is C, edit data. Next, session number 34, knowledge check test 3, about uh, TOS AI tool, TWOS, TWOS. टोज एआई टूल है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स है. तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोज असिस्ट इन टास्क मैनेजमेंट. इसका आंसर है बी, सजेस्ट रिमाइंडर्स बेस्ड ऑन नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक टोज यूनिक compared to traditional note taking apps. इसका आंसर है बी, यूजर्स एआई टू identify action points. नेक्स्ट, सेशन नंबर 34 नॉलेज चेक टेस्ट 4, सिमेंटिक स्कॉलर एआई टूल है, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिमेंटिक स्कॉलर. सो इसका आंसर है बी, समराइजिंग रिसर्च पेपर्स. नेक्स्ट, सेशन नंबर 34 सेल पाथ लर्निंग के ऊपर टेस्ट है. तो उसके स्टेप्स ऑफ है, रिव्यू टैब एंड बिजनेस स्पीच फॉर अ कैफे. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेल चेक ऑप्शन इज mentioned in the image, select the correct option. तो ये वाला इमेज है, उसका आंसर है डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक ऑन डैश एंड डैश टू एक्सपोर्ट द फाइल इन पीडीएफ फॉर्म. इसका आंसर है ये, फाइल एंड एक्सपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट सेशन नंबर 34, सेशन कंप्लीशन टेस्ट. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुजय wants to point his resume by visiting a printing shop, but the shop does not have an internet connections. Which of the following devices is most convenient for Sujay to carry the file for printing? तो इसका आंसर है बी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन, Richa is recording high definition HD video of her school's annual day. The video file size is 10 GB. She wants to store it on a physical disk. Why is a standard DVD not suitable for this? This can answer C. DVD can store only 4.7 GB, which is less than 10 GB. Next question. A bank wants to send a disk containing a secure software update to its customers. The management team wants the disk to allow customers to install the software, but they should not be able to delete or modify the files on the disk. Which type of disk formats is best for this purpose? So इसका आंसर है ये, ROM, read only memory disk. Next, question number 4, state whether
The following statement is true or false. A compact disc CD is suitable for storing 650 MB of digital data. इसका आंसर है ये true. Next question. Simran is worried about losing her piece uh, paper if her laptop damaged or stolen. She wants to access her file from her phone, her friend's laptop, or a cyber cafe. What is her best option to do this? Is the answer ready? Use cloud storage. Next question. A group of school students is most working and group project and needs to share and update files from different places. Which storage option would be most useful for them and why? तो इसका आंसर है सी क्लाउड स्टोरेज because files can be accessed and updated from anywhere. Next question. Compared to CDs and DVDs, why are Blu-ray and Ultra HD Blu-ray disc better suited for developing modern video games? Select two options है इसके. Answer है C and D. Next, question number 8. Which of the following two statements correctly describes rewritable RW optical disc? इसका आंसर है A and C. Next question. In a computer lab, students are learning about optical storage media used before never storage technologies became common. Which device had a typical capacity of around 700 MB? Select two answer इसके. Number A compact disc CD and D वाला है CD ROM. Next, during cybersecurity training session, employees are advised to be USB drives carefully. Which two statements correctly describes the risk associated with USB drives? इसका आंसर है ये एंड बी. तो इस तरह से ये था सेशन नंबर 34. तो यहाँ पर हमने एआई टूल के ऊपर नॉलेज चेक टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखे, सेल्फ पाथ लर्निंग के टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स देखे एंड सेशन कंप्लीशन टेस्ट के बारे में देखा. तो इस तरह से ये आंसर शीट रेडी है. तो आप यहाँ देखकर आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो ताकि आपके मार्क्स माइनस ना हो जाए. तो रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.